Hello students, today we are going to proceed for the numericals of this chapter. So let's have a look at the list of various formulas. Okay? First formula, you can see it is EMF is equal to rate of change of flux. ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, कॉस ऑफ द एंगल. अगर एक ही टर्न कंसीडर करना है, एंगल का वैल्यू 0 है, देन फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल B into A हो जाता है. बट दिस, तो वही फॉर्मूला इधर सब्स्टिट्यूट किया फ्लक्स के बदले. ओके, एंड देन B2 minus B1 into A divided by dt. ये टाइप के सम्स हम कर चुके हैं एक आध वीडियो लेक्चर में. ओके, then this type of sums also we have done. ट्रांसलेशनल मोशन EMF फाइंड करना है. अगर मोशन रोटेशनल है तो ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, L is the length of that rotating bar. This was the formula that we had studied in generators. EMF is equal to maximum EMF sin omega t. Omega is 2 pi f. Power का फॉर्मूला, okay, rate of doing mechanical work B square L square V square upon R. Length, velocity, resistance. अगर सोलेनॉइड दिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आई थिंक वी हैव स्टडीड इट इन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, वही यूज होगा ये चैप्टर में भी. देन न्यू टॉपिक्स, सेल्फ इंडक्टेंस. L is equal to number of turns, magnetic flux divided by current. Similarly here also एक और फॉर्मूला है मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस का, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल. ठीक है, सिमिलरली अगेन ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ओके, so formulas are quite similar, self inductance as well as mutual inductance. ये एक नया फॉर्मूला है मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, दिस इज सेल्फ कपलिंग एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ट्रांसफार्मर से आता है. ओके, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल टर्न्स, प्राइमरी कॉइल टर्न्स, प्राइमरी करंट and secondary current. So these are various formulas that we are going to use. Okay students, so we are taking the fifth sum from your textbook unsolved exercise. The question itself is so lengthy that I am left with very less space to solve. So you can observe that there is a metal disc जिसका RPS revolution per second दिया हुआ है. So I'll write this as N. Okay, 20 revolution per second. Small n is actually number of turns per unit length also, but physics 1 में n अपना revolutions होता है. ठीक है, then it is passing through that center normal to the plane. Okay, disc का radius दिया हुआ है which is nothing but 30 centimeter. Okay, and uniform magnetic field capital B का value दिया है which is 0.20 Tesla. Okay, and what they have asked you to find the area swept, how much area is covered by the disk, okay, per second, in 1 second. The flux cut, okay, again they have asked you to find the flux that is cut in 1 second and the EMF. Okay, so these all things we are supposed to find. Now the solution is quite easy. देखो, एरिया अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क सर्कुलर सेक्शन है. ओके, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर. बट एक सेकंड में फाइंड करना है. गॉट दिस? तो एक सेकंड में डिस्क कितना रोटेट हो रहा है, इट इज 20 रेवोल्यूशंस. इट इज मेकिंग 20 रेवोल्यूशन एक ही सेकंड में. सो एरिया 20 टाइम्स कंसीडर करना पड़ेगा इन 1 सेकंड. ओके, सो हियर आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय n so that I'll get the area for 20 revolutions, that too in 1 second. Okay, so यहाँ पे value substitute कर दो, 3.142 30 into 10 raised to minus 2. Okay, square this and then multiply this by 20. Okay, and when you solve this you will get answer as this. Okay,
सेकेंड पार्ट, फ्लक्स का फॉर्मूला तो सबको पता है, इट इज B into A। अब एंगल का क्या है, देखो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, एक्सिस इज पैरेलल, दिस दिस एक्सिस इज नॉर्मल, सो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, ओके, सो cos जीरो इज 1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.20 is the magnetic field and 5.655, this will give you 1.130 and flux का यूनिट क्या होता है, वेबर। got this, and we are supposed to find the EMF। now you can observe कि फ्लक्स जो कट करना था वो भी 1 सेकंड का ही फाइंड करना था, करेक्ट, एंड 1 सेकंड में 20 रेवोल्यूशन, तो हमने ये सब 1 सेकंड के लिए ही कैलकुलेट किया। सो इफ यू ट्राई टू फाइंड EMF, ओके, फ्लक्स का चेंज तो हमको मिल ही गया, एंड दिस इज आल्सो इन फॉर 1 सेकंड, so I will write 1.130 divided by 1 second, and that is how I get answer as same 1.130, and this will be in volt, okay, so this is how the sum is done। let's move on to the next question। here you can observe that there are two coils, okay, and उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, so that is our capital M, 1.5 Henry, okay, and current का change, it is 10 ampere, 0 to 10, I'll write this as DI, and the time required is 0.2 seconds, got this, so DI by dt we are getting this as 100, also 100 divided by 2, got this, so that is how this will make up 50, correct। now what they have asked, change of flux with the other coil, so you know that change of flux, that is the EMF induced, correct or not, so EMF का ही formula use कर सकते हैं, but since we are being asked flux, so volt will not be the last unit, okay, flux का unit क्या होता है, Weber, so we will be substituting that, so here as of now I will be writing, we have been supposed to find the change of flux d phi, but the formula that we are going to use is nothing but M di divided by dt, okay, so that is how you can observe d phi will be equal to 1.5 into this 50। अब directly solve this over here, so इसको multiply करोगे तो 75 Weber will be your last answer, okay। so let's move on for the next question, which is again quite lengthy, you can see solenoid which is given this many turns per meter, so ये हम लोग small n से denote करेंगे, okay, small n is equal to 1.5 into 10 raised to 3, ठीक है, and area दिया हुआ, area of cross section which is 25 centimeter square, उसको मीटर में करेंगे तो 10 raised to minus 4, ठीक है, एंड सोलेनॉइड के अराउंड एक और कॉइल है जिसके 150 टर्न्स है, उसको तो कैपिटल NC से ही डिनोट करना है, लिखा है, and you can see that 3 ampere current is flowing, so I value I'll write as 3 ampere, got this। now what all things they have asked us to find, 3 things they have asked, you can observe, first of all the magnetic flux density, magnetic flux density is if a term है difficult, actually it is nothing but magnetic induction, clear, flux linkage in the coil, flux for the coil you are supposed to ask, you are supposed to find, and then EMF, okay, and EMF find करने के लिए obviously time तो चाहिए ही हमको, so time का value भी दिया हुआ है, you can observe it is 0.5 second, so dt value is 0.5 second। now there is one more interesting part, EMF find करना है when the current is reversed in direction, इसको हम जब फाइंड करेंगे तब समझेंगे इसका मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज बी, सोलेनॉइड का फार्मूला आपको पता है, इट इज म्यू नॉट n into I, ओके, सो म्यू नॉट का वैल्यू 4 into pi into 10 raised to minus 7, this is the value of mu naught, small n का वैल्यू 1.5 into 10 raised to 3 and current value is 3। when you solve this, multiply it, you will get an answer 5.655 into 10 raised to minus 3 Tesla, got this। second is phi for the coil, okay, so यहाँ पर formula क्या है phi का, NBA,
करेक्ट. दिस फॉर्मूला आल्सो वी हैव स्टडीड इन द फॉर्मूला लिस्ट. यहाँ पर कॉइल के टर्न्स लेने पड़ेंगे. गॉट दिस. नाउ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग 155.655 into 10 raised to minus 3 and area which is given as 25 into 10 raised to minus 4. Okay, when you solve this powers properly solve karo, you will get answer as 2.12 into 10 raised to minus 3. Phi का unit क्या होता है? Weber. Got this much part? Now let's talk about EMF. I'll rub this part. The sum is so lengthy that board is also not sufficient to cover this. Okay, so EMF, you know that it is rate of change of flux. ठीक है, rate what है मतलब divide by time. Got this? So यहाँ पर dt तो आएगा and flux का change phi2 minus phi and or phi1 phi2 and it is in mod so that we get the answer in positive. Now flux is changing. How flux is changing? Try to understand. Initially flux ये था, correct? बाद में जब आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स. तो अगर इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो देन जब करंट रिवर्स करोगे देन इट हैज टू बी टेकन व्हाट? नेगेटिव. ओके, सो phi2 का वैल्यू समझ लो मैंने नेगेटिव में ले लिया. दिस got this negative. This is phi2 minus phi1 value is the same that we have calculated. ये वाला. Okay, and then divided it by time 0.5. 0.5 can also be written as half. I hope you agree with that. So यहाँ पर आ जाएगा half. Okay, so ultimately minus minus plus हो जाएगा. So this will give you 4.24 and this 2 in numerator and then 10 raised to minus 3 as common. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख देता हूँ. We know mod के बाहर obviously वो पॉजिटिव बन के आएगा and that is how we get answer as 8.48 into 10 raised to minus 3 volt. ठीक है, so this is how this answer is done. Okay students, last question for this session. You can see that there is a semicircular wire, radius r and uniform magnetic field B, okay, rotating about some axis, frequency to be denoted by F, and they have asked you to calculate the amplitude of EMF. Now this is a theory question, no numerical value, so students are getting confused कि इसको solve कैसे करना है and terms भी ऐसे है कि कुछ समझ में आएगा. But let me tell you, the question is really simple. EMF find करना है. I'll not write anything as given. Okay, EMF we know it is d phi by dt. Directly we will proceed for the solution. Okay, then phi का formula क्या है? BA and then cos theta. Correct? Then theta, if you remember, it can be written as omega t because theta is nothing but angular displacement. तो ये आ सकता है. Okay. Now एरिया हमको कंसीडर किसका करना है? सेमी सर्कुलर. सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो सेमी मतलब उसका भी हाफ हो जाएगा. तो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी माइनस b into pi r square divided by 2 into cos omega t. We are going to derivate this, okay, like this. Okay, so this is how we proceed. Now minus b pi r square by 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, डेरिवेटिव cos का होगा. cos का डेरिवेटिव आपको पता है इट इज sin. ठीक है, जनरेटर का टॉपिक देखा होगा, डीसी जनरेटर, उसमें ये पार्ट हम कर चुके हैं. ओके, सो दिस नेगेटिव साइन गॉट कैंसिल्ड एंड मैथ स्टूडेंट्स यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड ओमेगा टी फिर से डेरिवेट होगा एंड ओमेगा फिर से बाहर निकलेगा. गॉट दिस? सो माय नेक्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग ओवर हियर b into pi r square divided by 2 into omega and then sin omega t. So यही आपका जो वैल्यू रहता है इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. साइन के साथ जो टर्म है वो. एंड इन दैट डीसी जनरेटर टॉपिक इफ यू रिमेंबर दिस वाज डिनोटेड एज E naught. ओके, E max. करेक्ट? सो वही फाइंड करने बोला है. सो दिस इज आवर amplitude. So we'll get to the last answer. Therefore
E naught will be equal to V into pi r square divided by 2, and omega formula you know it is 2 pi f. So 2 got cancelled. That is how pi into pi square r square V into f. This becomes your final answer of the amplitude. Okay. Thank you.